So, good afternoon, everybody. So, this is the session of GS2 that in some portions has already been taken by Shubhra ma'am. So, all the remaining questions we are going to have a discussion. You know? So, in this particular session, I'll try to, first brief you about how exactly we are going to go about the questions that are remaining. So, the three important things. Yesterday, I have had a discussion with you guys, but since there was paucity of time yesterday and I was pretty certain that you guys were not in that state of mind. So given the paucity of the time, I had to rush sort of. So I'll just brief you how this session is going to be. We'll be doing it in two stages. I'll be ensuring that you guys have an idea where exactly are the questions coming from. That is the most important aspect. We are going to analyze the trend, the pattern, on the basis of which you will be in a position to predict the question. Yesterday, we did discuss but just one question, and I gave you a context as to where that particular question came from, which is the most important thing in mains. In the next 15-20 days, you will get all the model answers and all in the market. That is really important as well. But what is even more important is to have an understanding as to what exactly is playing in the mind of in the minds of UPSC before they were setting these questions, so that you are in a position to predict it right in advance. So that is the key, and that is what distinguishes the toppers from others. So first I'll give you an overview of this particular question paper, ताकि आपको you have an understanding how the questions are positioned, and how, if you have an understanding of the theme, once you have an understanding of the theme, all the questions are going to come under that particular theme. It becomes, if I can use the word, child's play if you have an understanding of the theme. See, UPSC is not a child's play, but if you have the right approach, it does become relatively easy. Okay, so what does that mean when I say that? So while I'll be discussing the questions, I'll be showing you where exactly those questions have been asked in the past, and how you could have sort of predicted that this question might come in this year, and precisely many questions have come. The crash course that I conducted, I've got the review and also from the students, and also when I analyzed the paper, I did feel that a lot of questions were directly coming from that particular course, and also some of them were modified in form. So ma'am has already taken, I think, 11 questions. I am supposed to do approximately 9 questions, one of which I have already discussed. So starting right away, you see that the first question that you have over here, which has already been discussed by ma'am, is talking about judicial independence. So this is a question which is talking about judiciary and the judicial independence, separation of power and checks and balances. And that's a very important concept that you have to study in polity, and every single year or every 2-year questions on this theme comes. So ma'am has already discussed, but why am I mentioning it over here? Because this question is again an extension of that particular question which I discussed yesterday. NALSA we did discuss yesterday, and I gave you an idea how you have to approach this question, because it was in news, and it was in news because there was Model Prisons Act, a new act in the current affairs. If you go through the current affairs magazine, you will find that it was in news. And why do we need NALSA, or why do we need paralegals in the very first place? Because there are various people who are not aware of their legal rights. They don't have legal awareness. They don't have access to lawyers who are very expensive. So it sort of creates a gap between the people who are seeking legal help and the people who are there to provide them with the legal help. To fill that particular gap, we find that this NALSA thing has been introduced. It was not already present in the Constitution. So that means that it was a step that had been taken by the state by amending the Constitution and putting it through the 42nd Constitution Amendment Act. So see, whenever any question comes in UPSC, it is pertinent on a part of an aspirant to have 10-12 keywords by their side. If you have those 10-12 keywords for any theme, you can, based on the tone and the tenor of the question that is being asked, suppose वो बोल रहा है कि elucidate or comment or critically analyze, based on the tone and the tenor that question is being asked, you can realign those keywords and create a story, fill that with case laws, give a case study, maybe give few examples, talk about what exactly are the constitutional provisions, issues, challenges. So that is how your answer should typically look like. So that should be the approach that you should always be having in mind. Now, when I say about this legal aid and NALSA, you see that the two questions are directly adjacent. The question that were asked with regards to judiciary.
Judicial independence, because Keshavanand Bharati was in case 50 years of Keshavanand Bharati. So UPSC does ask questions if something is on the 50th year, 25th year, 100th year. That way you need to look at things. 1973, 2023, 50 years. Judicial independence, and that landmark judgment was also under a lot of discussion that was taking place. Judicial independence being talked about, with the coming of NJAC. I hope you are aware of these NJAC. You guys are aware about these basic things, no? So that is how you would be in a position to predict these questions. Firstly, we have already talked about the second question and the details of it, so I won't be going there. I'll be moving ahead with what exactly you guys need to be aware of while looking at this question in the very first place. See, every year, this comparing the constitutions between the British and England or France or US, rights to equality. If you look at the previous questions, these questions were predictable in the sense India is getting closer to France. So India's secularism is always compared with French secularism. Likewise, India's constitutional provisions and the British are always compared. In the last 4 years, the questions have been asked in that particular pattern. Hence this particular question number 4 that came. Now, if you look at question number 5, ma'am has already discussed question number 4, so I won't be going there. Question number 5. And I'll show you why this question number 5 was asked in the very first place. So, what I have designed over here is this. So, this is the last 40, 50 years question paper that have been arranged in subtopic wise. Subtopic wise, and in the sense, in the last 50 questions, in the last 50 years, what all questions have been asked. So, suppose I take a theme of speaker. What exactly are the questions that have been asked in the last 50 years? So you have an understanding that the UPSC is repeating the questions on speaker in toto, in the sense, exactly in the form it was being asked. So if you see over here, in 2020, the question that was asked, once a speaker, always a speaker. Do you think that the practice should be adopted to impart objectivity to the office of Speaker of Lok Sabha? So what question that can come from the speaker is about his impartiality. How the speaker, based on the discretion that he has in certain criteria, he can misuse that particular thing, and in order to ensure that, what should be the provision to guarantee the impartiality of the speaker. For example, in the Britain, there is this provision that he has to disassociate himself from the political party to which he belongs. That is not the criteria over here in India. So this but many cases we keep on hearing where wherein we find that breakdown of the parties are taking place, the MLAs are moving out to the other parties. We do have the provisions of anti-defection law, but how that is getting misused, precisely why the role of speaker became very important in the last 4-5 years. And hence this question in 2020 was asked. In the very same pattern, this question was repeated this year also, but not being asked on the national level, but on the state level. See, and I'll give you an idea why exactly that thing was asked also. So if you have an idea, once a speaker, always a speaker, do you think that the practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India? It was 150 words, 2020. Okay? And the very, for example, in the representation of, so this question, so we find that, and also last year, the question that was being asked was on this, Vice President. Last year, the question that was asked was on Vice President. Yeah, I'll search it and see the last, we'll find it out. The last year, the question that was asked was, what is the role of the Vice President or the Speaker of Rajya Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha? So the UPSC had already asked the question on the Speaker of the Lok Sabha and the Speaker of the Rajya Sabha. So the next pertinent move of UPSC was to talk about the State Legislative Assembly, precisely what they have asked in this particular question. Discuss the role of presiding officers of state legislatures in maintaining order and impartiality, in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.
So it's an extrapolation of the questions that have been asked in 2022 and 2020. So if you analyze the previous year questions, you are in a pretty decent position to at least sort of talk about it. So what happens in the state legislature, you just have to change the articles, you know, and instead of Lok Sabha or Rajya Sabha, you have to talk about Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Practically most of the rules and the procedures remain the same. And so we are going to talk about that particular impartiality only. So that is one thing. If we move ahead, when you're talking about impartiality of the office, then you're going to talk about the same theme. For example, in the State Assembly of Maharashtra, things are, you find that in Manipur, there have been instances. In Karnataka, there have been instances. So what happens is that is things are happening on the state level. So you can just talk about the same thing and give examples, case studies of, or cases or examples of those things which are happening in the State Assembly. And State Speaker. Not every state is having the Vidhan Parishad. So accordingly, you are going to put things across and give examples. See, it is not possible for everybody to know every Vidhan Parishad, in all the Vidhan Parishad, what is happening. But when you are reading the news, you have a fair idea about what is happening in Vidhan Sabha in general, and what are the states, what are the issues that are happening. So directly the same points you are going to, which you have prepared for Lok Sabha Speaker, you are going to put in there. Okay? Getting back to the next question, the crucial aspect of development process. See, you need to break down the question. It's very important. Why this particular question becomes important? Because a very important theme that you have to study is economic growth versus economic development. What exactly is the difference between economic growth and economic development? So when you're talking about economic development, it does include certain social metrics like education, health, employment, education, and things like that, that gender equality, economic equality, things of those sort have to be brought into that particular aspect. So this is a very recurring theme in the previous year questions that are being asked. So what the question is being asking is that talk about the crucial aspects of development process has been the inadequate attention paid to the human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. So what is being talked about here is that we every year we find the reports of Human Development Index. We find that India is somewhere ranked really downwards. So it's a very recurring theme in India's developmental growth. So this is something which is a theme that needs to be prepared, and precisely why this question has been asked, asking about what exactly has been the reason behind it. Now when you're talking about this human resources, so you're going to immediately break down this human. Exactly what are the components of human? You can talk about gender inequality, you can talk about equality, and this equality is going to include the gender inequality. And when you're going to talk about gender inequality, you're going to talk about the situation of women in various aspects. And the very same question is the very same theme has been repeated in the shape of gender justice. We'll find another question that is being asked on gender justice and what is the role of the civil society that the civil society has played in ensuring that women get accessibility to state legislature. These are the three questions that we are going to see. I am putting these three questions under the same theme so that you have a fair understanding, that if you have an understanding of the theme, the questions, no matter how much maneuvering of the question takes place, you are in a reasonable position to answer those questions. My precise point of carrying out this investigation of the question paper in the very first part is to ensure that based on thematic understanding, you can solve questions. You cannot rush after every single question, because this year you're going to write the answers to this question. Next year the questions are going to be changed. So you're always going to be lagging behind. So what is the solution? According to me, the only solution, effective solution, is that when you have an understanding of a theme and you connect that to the current affairs which are happening every year, you become pretty reasonably positioned to answer those questions. अब देखो यहाँ पर human resource development की बात हो रही है, तो immediately break down this human into, you can talk about the gender
inequality, or we can talk about economic equality, we can talk about education, है ना? You can talk about health, and when you're talking about health, you can talk about the health of a child and of a woman. This can come over here also. Gender में you can talk about women also. Malnutrition का concept पढ़ा होगा कई बार आप लोगों ने. Malnutrition, children stunting, wasting, concepts like this, है ना? Acute malnutrition जो चल रहा है, severe acute malnutrition, breastfeeding, things like that, पोषण अभियान, ये सारी चीजें are associated with this particular concept only. So imagine this is a human, right from the stage of the birth to an elderly person. How are these resources going to be being beneficial to the economy? How will you ensure that the human resources are optimally utilized? When the components of human are served well, how will that happen? Firstly, health. Any child that is getting born, it has to be ensured that the proper nutrition is being served to it. Firstly, the women who are giving birth to the child, they are also not suffering from malnutrition. Early marriages, child marriages, where the women have not completely are in a position to give birth to so many children, that has a severe impact. And maternal mortality rate, we find that India is one of the highest maternal deaths taking place in our country. So all are those social issues. When the women are subjected to such sort of situation wherein she is not healthy, she is not having proper nutrition, the child that is going to come is also going to suffer from the same problem. If the child is having stunted growth, wasted growth, not getting proper education, he will never be able to maximize his output in terms of gaining the skills. And when he will not be in a position to gain proper education, because of this limitation, he will not be in a position to gain proper employment opportunities. And whenever we are going to talk about employment, we are going to talk in the range of 15 to 59. That is the important age group where we find that we talk about the resources which have to be very optimal. So we find that when we are talking about human resources development, we are going to talk about these aspects. The gender aspect, women are not getting equal opportunities in terms of the jobs, are not getting equal opportunity in terms of higher education. Early marriages is a restriction on a woman's growth as an individual. So women is an altogether different section that we have to study, and accordingly the questions can be tackled based on what are the issues that women are suffering from. So first, health wise, both child and women, mothers, then we are going to talk about education, we have already talked about, and then we are going to talk about employment. Now the moment we are going to talk about employment, India is not suffering from as much from unemployment as much as from underemployment. In the sense, if you are supposed to earn say 100 rupees, you are earning 40 rupees because of the various factors that we are going to discuss eventually. So that is the problem that India is suffering from. Now women, although they comprise of 50% of the total population, their presence in the labor participation is very low, abysmally low. And that is also to do with this particular thing. That has to do with the health and also with the early marriages in a patriarchal society where the women are not subjected to so many opportunities because of the various factors. She is sort of perceived to be doing pink collar jobs, also referred to as care economy, nursing, teaching, jobs like that. So what happens? She is not going into more specialized sectors like STEM, science, technology, engineering, mathematics. So these are the things which is having a compound impact. So this is what your human resource development is going to be all about. Now read this question again. The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to human resources development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. Now if you have pointed understanding of every issue at every stage, you can very well come up with answers and give out solutions to that. We are going to discuss on that. But before we do that, I just want to draw your attention towards a similar sort of question that has been asked. Before we go into the other aspects of things, see this question.
explain the constitutional perspectives of gender justice with the help of relevant constitutional provisions and case law. अब अगर आपने विमेन सेक्शन को या जेंडर सेक्शन को, जेंडर जस्टिस के सेक्शन के थीम को अच्छे से प्रिपेयर किया है, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इट thoroughly well, talking about exact issues that women, now over here most of you are going to restrict yourself to women, but see over here the word used is gender, and after Nalsa versus Union of India, even the transgenders are regarded as a third gender. So we can break down this gender further into female, transgender, LGBTQ can also be talked about here. See, this is a 15 marker, है ना? So you first need to structure the answers, how you're going to come up with more points to address this question. Had it been 10 marker, ठीक है, मतलब से women issues के बारे में लिख दिया, बात खत्म हो गई. But that is not the situation over here. So gender justice we are talking about. So gender justice, you're going to talk about women, and immediately you can shift to this transgenders, and maybe you can talk about LGBTQIA plus as well. Raging issue last year, same sex marriage and issues. सेम सेक्स मैरिज वाला इशू चल रहा है ना अभी, LGBTQ वाला, और उससे रिलेटेड कितने सारे केसेस हैं. नास फाउंडेशन का केस है, और कौन से केसेस हैं LGBTQ वाला? नवतेज जौहर वाला केस है, नास फाउंडेशन का केस है ना. वी ऑल्सो फाइंड दैट अभी हम लोग देखते हैं कि सेम सेक्स मैरिज पे इतना सारा डिबेट चला है ना. नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडर्स के बारे में केस है. तो केस मैटर्स तो आपने इमीडिएटली पहले ही शेप में निकाल के दे दिया है ना. आपने जैसे ये ट्रांसजेंडर्स लिखा तो ट्रांसजेंडर्स बिल और जो एक्ट था उसके बारे में आप बात कर लेंगे. LGBTQ के इश्यूज है, 2 पॉइंट यहां पे आप रख लेंगे. विमेन के बारे में आप बात करेंगे तो विमेन के कितने सारे इश्यूज हैं, विमेन के बारे में आप बात कर सकते हैं. उनके इनहेरिटेंस के बारे में, यू नो, we're going to talk about violence against women को भी हम लोग एक सेक्शन में डाल सकते हैं. Violence against women will include marital rape, डाउरी वाले इश्यूज जो है ना. वी टॉक अबाउट द एसिड अटैक्स ऑन विमेन, ये सारी बहुत सारे इश्यूज है. 8-9 अलग अलग तरीके के हम लोग उसको सब सेक्शंस में भी बांट सकते हैं. बट मेजरली को पार्सनरी राइट्स, द राइट टू इनहेरिटेंस, 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज अमेंडेड एंड विमेन वर आल्सो गिवन द राइट्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी, है ना. अर्लियर देयर वाज ओनली मेल हु कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले तो देखो इस बात को समझना जरूरी है कि विमेन को ऐसी जगह पर पोजीशन करना कि वो डिसीजन मेकर हो सके. नेम सेक के लिए तो एक थीम और भी एग्जिस्ट करता है ना, सरपंच पति वाला एक थीम चलता है कि भाई सरपंच, women have been made सरपंच but the decisions are being taken by the husband. That is just the nominal positioning of women, and that will bring me to the next question that we are going to talk about over here. जैसे जेंडर जस्टिस के बारे में आप बात कर रहे हैं तो you are going to talk about the inheritance right of the women. You are going to talk about, traditionally we just keep on talking about female infanticide, child marriage and all, but what are the contemporary challenges that women are facing? Abortion rights, right to use contraceptives, है ना. फिर और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव राइट्स में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज. अभी अबॉर्शन लॉ चल रहा था, उसके बारे में. फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उससे जुड़ा हुआ है ना. सरोगेसी वाला इश्यू चल रहा है, वो हो सकता है. विमेन का सबसे ज्यादा जो डेथ ये हम लोग देखते हैं कि फीमेल इन्फेंटिसाइड है, वो तो है ही. ट्रेडिशनली वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू सच सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस, बट इसके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन हायर जुडिशियरी पे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है. अब सोचो, विमेन इन हायर जुडिशियरी पर क्वेश्चन पूछा है 2022 में, 2021 में क्वेश्चन पूछा है पंचायत पे, और थर्ड अभी पूछ रहा है विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर. डोंट यू थिंक दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन का एक सीक्वेंस हम लोग बना सकते हैं? वी कैन प्रेडिक्ट द पैटर्न. द क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन, अभी देखो द एक्ट केम, नो विमेन का रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, इन पार्लियामेंट, that act came. So that was a natural extension of what exactly has already happened, and the questions have already been asked. So whenever you're going to talk about the gender justice, you need to talk about the contemporary issues also. So this question can be solved if you have a broader thematic idea of what exactly are the problems of women. ठीक है. अब मैं third question को इसके साथ जोड़ करके अभी we are going to go back to the discussion of every topic. See this question number 14. Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India. Women से 3 क्वेश्चन तो यहां पूछ दिया सिर्फ GS2 में. आप ऐसे चेक करके जाओ, ऐसे के टॉपिक्स चेक करो, उसमें भी विमेन इश्यूज पे सवाल है. एक ऐसे का टॉपिक
विमेन पे ही है। 2020 का ऐसे उठा करके देखो, पेट्रियार्की पे क्वेश्चन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो एक ब्रॉडर थीम अगर आप प्रिपेयर करते हो, योर ऐसे क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आंसर्ड। योर GS1 सोशल इश्यूज में ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी आंसर्ड। GS2 3 questions I showed, the question can be answered. So what I'm trying to come to the conclusion is that if you have a thematic understanding of the issues, every year you just need to add value as to what is being discussed in the newspaper. That positions you in a very effective manner to deal with the questions. Otherwise you will always end up rushing after the questions कि भाई ये सवाल पता नहीं कहां से पूछ दिया, है ना? See, now I'll bring your focus into two important things. Women's effective. Word use किया effective. UPSC doesn't use any word for the sake of using it. There is a logic behind that particular question. Women's effective and meaningful participation. कहीं ना कहीं सरपंच पति वाला थीम अगर आपको याद है तो वो बस नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज जस्ट नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन. सो व्हाट इज बीइंग at least being tried to be asked over here कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं सरपंच पति वाले थीम पे, उससे अलग हट करके what are the things that can be done. But this question is not easy. Why do I say that it's not easy? It is trying to combine two concepts, civil society and women issues, and it is trying to club these two concepts together. See, UPSC के questions is always about interlinkages. कभी भी UPSC को interesting क्यों बोला जाता है? UPSC is not asking questions on any horizontal theme. It is going to add 2-3 themes and it is going to put them together and it is going to ask you that particular question कि भाई बताओ क्या solution है. तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस particular situation में पहुंचने में किन किन का roles रहा है. अगर आप governance पढ़ेंगे, if you are going to study governance, you are going to study a theme of civil society. Civil society and what role that civil society is ensuring to bring about this gender justice. इसको मैं कह सकता हूं ना ये जेंडर जस्टिस है. लास्ट ईयर द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज द रोल ऑफ द वुमेन इन हायर जुडिशियरी. यानी हायर जुडिशियरी पे वुमेन का क्या रोल होना चाहिए उस पे पूछा. तो अब आपके पास क्या बच रहा है? ये एक बच रहा है स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत के बारे में पूछ चुका है, जुडिशियरी के बारे में पूछ चुका है, स्टेट लेजिस्लेचर बच रहा है. और उसमें भी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल सोसाइटी ग्रुप. सो 3 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटमेंट विद the question that is being asked. ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो you are good to go. और एक सवाल लास्ट में डिस्कस करता हूं, उसके बाद we are going to get into the details of this particular question. ठीक है, देखिए डिक्टेशन इज इंपॉर्टेंट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. डिक्टेशन और मॉडल आंसर्स आपको इवेंट के हो जाने के बाद का सोल्यूशन दे रहा है. एक तरीके का आफ्टर थॉट है वो. आपने देखा, आपने आंसर सोचा, गूगल किया, लिखा या जो भी किया, डिस्कस किया एंड यू रोट द आंसर. यूपीएससी को अगर मोस्टली मेंस को अगर इफ यू हैव टू एड्रेस दिस, यू नीड टू बी प्लेइंग विद द साइकी ऑफ यूपीएससी बिकॉज यूपीएससी कंटिन्यूअसली प्लेज विद योर साइकी. भाई आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे? जिस दिन आपको वो लेवल आ जाएगा प्रिडिक्शन करने का कि ओके दिस नाउ यूपीएससी कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज इन द लास्ट 10 years दे हैव नॉट आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड दे हैव बीन आस्किंग ऑन द रिकरिंग थीम. The moment you reach that stage, you can predict the question, है ना? अब इसको देखिए, skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. In the context of the statement, analyze the linkage between education, skill, and employment. Don't you think that when I was discussing about the human resources and when I tried to break that human thing into the various compartments, I did talk about education, I did talk about health, I did talk about gender equality. Why am I emphasizing on gender equality? Because women form a substantial part of our workforce and they are being subdued either because of the various factors, either getting married earlier or नॉट एजुकेटेड इनफ. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक और भी है, स्कूल और कॉलेजेस तक विमेन आर कंपीटिंग विथ मेन एंड इवन आउटशाइनिंग मेन. इवन आउटशाइनिंग न्यूज पेपर में पढ़ते रहते हैं ना हम लोग कि बेटियों ने लड़कों को पछाड़ा, थिंग्स लाइक दैट. बेटियों ने झंडा गाड़ दिया, थिंग्स लाइक दैट, यू नो. गोल्ड मेडलिस्ट आर विमेन,
but all of a sudden they disappear from the workforce. All of a sudden, after the college, after all those gold medals, after all the schoolings and everything that have been done, they completely disappear from the workforce, or they're in very small percentages. Forget about higher education, forget about those managerial roles that they're subjected to play, forget about politics and other things. Women are become a mere dependent on the personality of a man. And this is known as leaky pipeline syndrome. Or even if they are working, the choices of jobs that they are given are restricted to care economy, and that is known as pink collarization of the job. So you see the opportunities of the women in terms of representation and in terms of how they are going to go about their conduct is restricted. Add to that fact that she forms a very substantial part of the labor force, and we are one of the youngest countries of the world, and we are talking about economic growth and economic development. Don't you think that the contribution that they can make in this economic growth and development is, the potential is huge? Don't you think that the reason why they are disappearing from the workforce is very alarming? And the moment we address that, our economic growth and our economic development is going to take a huge leap. अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं, तो अब आप सवाल को रीड कीजिए. Education, skill. See, whenever we are going to talk about economic development, it is always going to be capital intensive. Capital intensive मतलब क्या? Technology, usage of machines, usage of more advanced, अभी machine learning, AI, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो जो dependency on humans है, that is going to get limited. And जो काम 100 आदमी मिलके कर रहा था, that can be done by one machine. So what is going to happen? Those 99 people are going to rendered jobless, unemployed, unless they are given skills. So if at all quality jobs or services have to be done, education has to be combined with skills. And unless the skill is there, the person is always going to end up doing some sort of substandard job. And when that person is doing substandard job, the amount of money that that person should be making is very low. And the contribution that it can have is very dismal. बात समझ में आ रही है? Forget about women. Women तो हैं ही नहीं अभी workforce में. Are you getting the point? That is why this question. Linkage between education, skill and employment. समझ में आ रहा है? 3 सवाल जो एक similar theme में recurrent theme है, वो आप समझ पा रहे हैं? ये ज्यादा important है समझना. ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? So we find that, see, question number 18, I'm reading it again. Skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. Now you're going to immediately break down this various sectors. What are those various sectors? Primary, secondary, tertiary. Primary, secondary, tertiary. Primary के क्या क्या issues हैं वो आप समझ जाओ. अगर एक concept पढ़ा है feminization of agriculture. The men are shifting to, because agriculture is not a profit-making avenue for most of them. They focus on traditional agriculture. People are having small land patterns. They're having, so they cannot carry out intensive capital agriculture. जो investment करना चाहिए उनको tractors, machines पे वो नहीं कर पाते हैं. Profitable है नहीं. So what do they have to do? They have to migrate to the city in search of better opportunities. But they are not skilled enough to be working in a service sector. So where do they land up? They'll end up doing menial work. They'll end up doing construction labor का काम. They'll end up doing छोटा टपरी खोल लिया. Things like that. उसी से urbanization का issue यहीं से उभर के आ रहा है. Urbanization के क्या issues हैं, है ना? इधर ही से राइज करके आ रहा है. और प्रॉब्लम भी ये है कि अगर उन माइग्रेट कर भी रहे हैं तो छोटे शहरों से डायरेक्टली बड़े शहरों में जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारा रूरल इकोनॉमी रोबस्ट नहीं है, पहली चीज. और जो स्मॉल टाउन्स हैं जो कि इमीडिएट एब्जॉर्बर्स हो सकते थे उनके, वो भी डेवलप्ड नहीं है. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक छोटे छोटे पॉकेट्स में बटा हुआ है. सो दे यू विल सी पीपल फ्रॉम यूपी, बिहार माइग्रेटिंग टू दिल्ली. ऑल ऑफ अ सडन कहां जाना है? दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है. अब
The moment they reach Mumbai and Delhi, the pressure on the infrastructure rises, and there is an urbanization problem that is taking place because of all that. So are you able to link the concept? ये अगर आप linkages को समझ रहे हैं तो ये सवाल सॉल्व हो सकता है, तीनों सवाल आराम से. We are going to talk. So see, skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors. यहाँ पर I'll just add one more point. क्या होता है, with the coming up of technology, every 5 or 10 years the nature of jobs are changing. All of a sudden जो traditional jobs हो, पहले typist, shorthand के लिए भी लोग पढ़ते थे. With the coming up of laptop, it has gone. With the coming up of AI, coding and other things which are, or content creators are going to go down the drain. So what is happening? We are preparing ourselves for something, but with the coming up of automation and other things, we are rendering ourselves useless for that particular thing. 90s में maybe your आपके कोई रिश्तेदार US चले गए, engineering का बहुत उस वक्त था कि भाई, because you know people were moving to the west and everybody started doing engineering. So supply बढ़ गया, demand of the job got reduced. Ultimately there is a demand supply mismatch जिसकी वजह से they end up doing something else. पढ़ा होगा आपने computer science, but कर रहे हैं कुछ और, है ना? या mechanical पढ़ा होगा, please. आ रहे हैं. Skill development programs, यही जो mismatch है ना, mismatch between the jobs and vocational education जो होना चाहिए, उसको लिंक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ITIs जो होते हैं, we are going to talk about the details of it. स्किल इसलिए डेवलप करवाया जा रहा है ताकि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप फिट हो सके. यू आर फिट टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब. इफ देयर इज गोइंग टू बी मिसमैच, देयर इज गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयमेंट. नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इनके प्रोग्राम्स कैसे पता चलेंगे सेक्टर वाइज? स्किल डेवलपमेंट के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन आपको 8-10 जो भी मेजर प्रोग्राम्स है ना, कॉमन प्रोग्राम जो न्यूज में आते रहते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PLI, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, है ना. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. ठीक है, वही देखिए, इट्स अ 15 मार्कर. वेरियस सेक्टर्स में हो सकता है कि आप यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, बट ब्रॉडली यू हैव अ फेयर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली आर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट आर गोइंग ऑन, है ना. सो वी विल सी दैट, है ना. अभी मैं सिर्फ थीम आपको समझा रहा हूं. अब वी आर गोइंग टू टेक एवरी क्वेश्चन इंडिविजुअली. ठीक है, सो यू विल बी पुटिंग योरसेल्फ इन अ बेटर सिचुएशन टू आंसर इट. इतना समझ में आया? 4 सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना. ब्रॉडली देखा कि किस तरीके से सॉल्व करना है. अभी हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में जो हमें करना है. ठीक है, नालसा का डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. ये भी मैंने आपको एक आइडिया दिया कि सवाल को हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्रिजनर्स न्यूज में रहा है, उससे आप ह्यूमन राइट इश्यूज, वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट इश्यूज एंड देन हाउ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब जैसे देखते हैं 5th क्वेश्चन को हम लोग करते हैं. ठीक है, 5th क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स. तो my approach over here, see, I'm not going to dictate anything, but if there is anything substantial that you guys need to know, I'm going to put you down in the form of keywords, है ना, because I have time constraint and I want to do it qualitatively, so both things cannot run together. Let's break down this question. Whenever the question comes, break it down. Discuss the role of presiding officers. ठीक है भाई, presiding officers मतलब क्या? Speaker of what? Legislative Assembly and Legislative Council. क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है. प्रीवियस क्वेश्चंस अगर इफ यू वुड हैव जस्ट सीन इट, यू कुड प्रिडिक्ट इट. इन मेंटेनिंग ऑर्डर, दैट मींस डिसिप्लिन, ऑर्डर, द वेरियस कंडक्ट ऑफ द बिजनेस दैट इज सपोज्ड टू बी डन. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी. वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, है ना. उसके इम्पार्शियलिटी के बारे में ऑलरेडी पूछ चुका है उसी थीम में. तो योर कीवर्ड्स should be prepared for that question that has already come. Now you are going to just replace the articles and replace that speaker and chairman of Rajya Sabha into this. In conducting legislative work, who has got the authority to issue the certification of a bill as a money bill? Speaker. Legislative work क्या क्या हो रहा होता है? यही हो रहा होता है, लॉ को पास करना ही तो लेजिस्लेटिव वर्क है. कमिटीज को भेजना लेजिस्लेटिव वर्क है, डिस्कशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. किसी को सस्पेंड कर देना क्या है? लेजिस्लेटिव वर्क है. अभी सस्पेंड बहुत सारे एमपीज हम लोग देखते हैं कि हो जाते हैं. कौन कर रहा है? स्पीकर, है ना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड
जो भी कंडक्ट हो रहा है उस 4 वॉल्स में ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, उसका कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर के पास। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है एडजर्न कर सकता है ना, या मीटिंग को बुला सकता है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लेजिस्लेटिव वर्क एंड फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस वर्ड जहां देखा, इसको अगेन ब्रेक इट डाउन इनटू 2-3 पॉइंट्स। डेमोक्रेसी मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, एक्सप्रेशन, डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन ओवर टॉपिक्स, क्वेश्चन आवर, 0 आवर। यार क्या है यही सब? यही सब तो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इज व्हाट? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि एक स्पीकर को अपॉइंट कौन कर रहा है? द हाउस एंड द पार्टी विच इज इन मेजॉरिटी। तो इट इज अ गिवन कि वो बंदे की लॉयल्टी इज ऑलवेज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द पर्सन हु इज अपॉइंटिंग इट. It is the integrity of that person that can be the only objective way of making him impartial, or otherwise spell it out in the constitution, write it down. You have to disconnect yourself, or there's going to be some sort of penal provision if it comes out to be a blatant misuse of the authority or the power. समझ में आ रहा है? अगर एक व्यक्ति की लॉयल्टी को कैसे चेक कर सकते हो? अगर मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग, इफ आई एम द डीएम, मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग करने की पावर इज विद द सीएम and my salary is dependent on my boss. Do you think that I can go in the face of the boss and talk, even though I feel that you are disgruntled with the boss? Can you talk about the things? You cannot. You're always going to be listening to what he has to say. That is precisely the structure of this speaker. So whenever we are talking about impartiality, it is something which is a very controversial thing, because मैं कैसे, आप ethics पढ़ लोगे तो इस बात की गारंटी है कि कल को आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी करप्ट, इवन दो यू गॉट 130 मार्क्स इन एथिक्स, दैट डज नॉट गारंटी यू, दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटीग्रिटी, राइट? तो अब देखो ये अपने ब्रेक डाउन कर लिया इस सवाल को. द मोमेंट यू हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू पीसेस, नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू टेक दिस क्वेश्चन. अब मैं जो फाइनल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सबने लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, तो अब आप कनेक्ट कर पाएंगे. ये सवाल लक्ष्मीकांत से मे भी सॉल्व हो सकता है कुछ हद तक. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है, देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी. व्हाई डिड आई हाईलाइट दिस? बिकॉज इट्स अ रिकरिंग थीम, फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस. तो आवर अप्रोच क्या कि स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पीकर. क्या क्या है भाई, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहला पॉइंट, ये आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, पूरा नहीं लिखना है. बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाओ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट क्वेश्चन 10 मार्कर है या 15 मार्कर. तो फर्स्ट थिंग, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑर्डर एंड डेकोरम, डिसिप्लिन. ठीक है, फिर देयर इज सम क्वाजी जुडिशियल रोल आल्सो ऑन मैटर्स ऑफ प्रिविलेज. पढ़ा होगा आप लोगों ने, कलेक्टिव प्रिविलेज, इंडिविजुअल प्रिविलेज टू द एमपीज एंड द एमएलएज. कौन करता है? वो यही करता है. He can summon witnesses, he can demand papers and documents. तो ये तो ऑर्डर ही हुआ ना. ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स. इस पार्लियामेंट्री रूल्स की जगह आप लिख सकते हो असेंबली, स्टेट असेंबली रूल्स. गेटिंग द पॉइंट? सी आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू गाइज. ये दे दूंगा पूरा आपको जो भी है, ये आंसर्स है ना. दैट इज नॉट एन इशू, मिल जाएगा आपको. बट द पॉइंट इज, क्या आप अपने आप को अलाइन कर पा रहे हैं कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है? That is the key which people usually don't reveal or don't talk about, है ना. That is why it takes such long time to crack this exam. ये मैं नहीं भी बताऊंगा, 4 साल की तैयारी के बाद आपको समझ में आ जाएगा. अब I'm just trying to save you your 4 years. ठीक है, previous year questions is the most important thing to understand the psyche of UPSC. Once you have done that, you are good to go. 95% of the people don't even know the syllabus and previous year questions. If you just have a fair idea in details what exactly previous year questions are talking about, you are in that 5% group. अब देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द, ये 2-3 पॉइंट लिख दिया. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर लिख दिया, है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट किसका है? स्पीकर का है. मैनेजमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री, आप पार्लियामेंट की जगह चेंज करते जाओ.
असेंबली हाउस स्टेट, मतलब जो भी उसका बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सबकी किसकी है? स्पीकर की है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर्स हैं स्पीकर की है ना। कुछ लेजिस्लेटिव रोल्स हैं, जैसे क्या? पुटिंग द बिल्स टू वोट एंड द रिजल्ट्स ऑफ द वोट, ये उसकी जिम्मेदारी है। कास्टिंग वोट का पावर उसके पास है, तो ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव फंक्शन। आई होप आप लोगों में से लोगों ने थोड़ा बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, है ना, सब दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ द बिल, यहां पे इसका डिस्क्रिशन चलता है। मनी बिल, आधार एक्ट वाला जो चला था, इट वाज पास्ड एज अ मनी बिल व्हिच वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी दैट इरप्टेड बिकॉज ऑफ दैट। क्या होता है मनी बिल से पास करने से? बाईपास कर देगा अदर हाउस को। राज्यसभा डजंट हैव द पावर टू ऑब्जेक्ट टू इट, इवन इफ इट टेल्स दैट आई एम नॉट पासिंग इट, इट हैज टू पास। गॉट द पॉइंट? बहुत सारे कमिटीज को हेड करता है। तो ये 5-6 पॉइंट्स आपने लिख दिया, आपका काम हो गया ऑर्डर ऑफ द हाउस के बारे में। कुछ जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ना, जहां पे डिस्क्रिशन आता है वहां पे इंटीग्रिटी आ जाती है, और वहां पर उसकी इंपार्शियलिटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। दैट पर्सन हैज टू बी इंपार्शियल एंड दैट इज द ग्रे एरिया व्हिच नीड्स सुपरविजन फ्रॉम सम सुप्रीम अथॉरिटी, इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज जो भी डिसीजन ले रहा है स्पीकर, दैट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। लैंडमार्क केस है किहोटो होलोहन का केस, अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा तो किहोटो एक होलोहन का केस है जो ये बोलता है द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो डिस्क्रिशनरी पावर, किसको अलाउ करना है स्पीक करने के लिए बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, किसको बैठा देना है, कौन ज्यादा सवाल कर रहा है उसको हटा देना है, ये सारा डिस्क्रिशनरी पावर इसके पास है, ठीक है। अब इंपार्शियलिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए और ऑटोनॉमी ऑफ द स्पीकर के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उनको देखते हैं। ग्लोबली जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं, दैट कैन बी योर एसओपीज कि भाई इफ मैंने ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि स्पीकर जो ब्रिटेन में होता है, he has to be a non-party person, he has to completely disassociate himself from the political party, so that can be done. उसका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करवाया जा सकता है कि how is supposed to act in a particular situation, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके, जैसे सिविल सर्वेंट्स का एक कोड ऑफ कंडक्ट का आपको एक बाकायदा साइन करना पड़ेगा कि आप यू आर सपोज टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। You cannot be directly calling the media and giving the press conferences talking about the policies of the government. You cannot do that. You are a government servant. Your role is to implement the policies and not question the policies. Where is it coming from? The code of conduct of civil servants. तो एक code of conduct होता है जिसमें कि the expected behavior on your part. So that is something training and development can be done. ठीक है? तो what are the issues? Issues surrounding the speaker. Already I have talked about some of the criticisms. क्या है? Partisanship. He tends to have his loyalty shifted towards the party who has appointed him in that particular position. तो constantly वो उसको favorable time देगा, है ना, या उस वो जो चाह रहा है वो कर सकता है। तो partisanship is one thing. Use of discretion, जैसे किहोटो होलोहन का मैंने आपका केस का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वो बायस्ड मैनर में एक्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई कि जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा आपका अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। कई के बार जब वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो सवाल उठाए जा रहे हैं बाय द ऑपोजिशन दैट रिक्वायर्स डिस्कशन, उसको डिसरप्शन के तौर पे कैसे उसको बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, या फिर हाउस को खत्म कर दिया, ऑर्डिनेंस ले आए। इफ आई कॉल अप द हाउस, इट इज डन, देन द ओनली ऑप्शन इज द ऑर्डिनेंस, एंड वंस द ऑर्डिनेंस कम्स इनटू प्ले, द डिस्कशन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस. And at least for that limited point of time, it is going to have the power of a law. Are you getting the point? So things like this, the way it is getting handled, and there has been instances where the speaker has faced criticism for his or her handling of disruptions in the office. We find that the disruptions have risen to disproportionate level, and because of this, what is happening? Because of this, the discussion on relevant issues have not been taking place.
and guillotine has taken place. उसका नतीजा क्या होता है? Bureaucracy starts taking more authority, which we talk about in the shape of what laws? Delegated legislation. Have you heard of delegated legislation? Delegate कर देना bureaucracy को. भाई अगर discussion होगा नहीं, 10 issues हैं, you are disrupting the parliament, only 3 issues are getting discussed, the 7 issues that were supposed to be discussed are declared pass. Then who is going to frame the rules, the laws? Bureaucracy. And do you think that the bureaucracy has been formed to formulate laws? No. उनका काम तो execution का है. That means bureaucratization rises because of this. And who are bureaucrats? They are on the goodwill of the politicians. Are you getting the point? बात समझ में आ रही है? तो relations with the media, नहीं जवाब नहीं दूंगा मीडिया को या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस. डिस्क्वालीफाई कर देना किसी को भी, है ना. जैसे कर्नाटका एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन का केस 2019 आप एग्जांपल दे सकते हैं, है ना. एंटी डिफेक्शन के साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं. केस स्टडी दे दो आप. गेटिंग द पॉइंट हाउ योर आंसर शुड लुक लाइक. केस स्टडी एक दे दिया कि भाई अभी 2017 में मणिपुर का केस हुआ था, जहां पर हम लोग देखते हैं कि बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट इन मणिपुर आफ्टर 7 लेजिस्लेटर्स ऑफ कांग्रेस ज्वाइंड द बीजेपी. The Congress party asked the speaker to disqualify them, but the petitions were kept pending. They were kept pending. ठीक है. हाँ, एग्जाम्पल दे दीजिए कर्नाटका असेंबली का केस, मणिपुर का केस दे सकती हैं. ये तो आपका स्पीकर है तो भाई आपको पार्टीज का मेंशन आप कर सकती हैं, बट अवॉइड कीजिए. यू कैन अवॉइड इट. ऑपोजिशन लिख दीजिए. हाँ ठीक है. अब ऐसे ही कुछ कुछ केसेस और हैं. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एसए संपत कुमार वर्सेस काले यदया एंड अदर्स के केस में बोला, तेलंगाना एमएलए के केस में. सो देयर आर दीज केसेस दैट यू आर गोइंग टू पुट थ्रू एंड यू गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंटी डिफेक्शन लॉ में, जहां पे वो डिस्क्रिप्शन को यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है. एंड हाउ द जुडिशियरी इज कमिंग आउट स्ट्रॉन्ग ऑन द स्पीकर टू मेंटेन दिस impartiality. Are you getting the point? Can this question be solved? Can this question, could this question have been predicted based on the previous year questions? हो सकता है. थोड़ा सा लेवल आने दीजिए. अभी just like I have introduced you to a new game and you want to be in the 10th or the 11th level, it is going to take you some time, है ना? But you have a fair idea about it, है ना? So this is how the question is going to look like. ठीक है. Moving to the next question. Fifth question हो गया. Ma'am has discussed I have discussed the second. Third ma'am has discussed. Fourth she has discussed. Fifth. ठीक है. अब let's get to the sixth question. अब theme आपको समझ में है, दिमाग में है. You have already an understanding of human resource development. Let's read this question again. The crucial aspect of development process has been inadequate attention paid to the human resource development. ठीक है. Immediately human resources को you can break it down. You can talk about the fact that जो trickling effect पढ़ा है आपने, trickling effect. Does anybody know trickling effect? मतलब 99% of the wealth is in the hands of 1% of the population. Just giving you an example. ठीक है. Don't go by the data. And say 1% of the population is having 1% of the wealth is with 99% of the population. That means economic growth तो हो रहा है, but economic development नहीं हो रहा है, because it is not trickling down to the common public. The beneficiaries are not getting impacted positively in the same proportion. इसका एक छोटा सा example, I'll give you a very small example. So suppose 100 people were there and they were producing 100 pens. All of them were working, say suppose village women, I hired them and they were making say tokeries, 100 tokeries. So we can, and suppose it was getting sold at 10 rupees. So 100 into 10 is 1000 rupees. That was the GDP for that particular thing. Getting the point? What I did, what I purchased the machine, suppose it cost me 100 rupees. In that one machine I require one man. And now he is producing 1000 tokeries. And I'm selling it at say 5 rupees. So now the GDP is 5000 rupees. है ना? Even though the GDP is 5 times more than the one, but we find that 99 people are unemployed. So even though the money rose, economic growth took place,
but the economic development did not take place because it did not trickle down to those people. It went in the pockets of that entrepreneur. उस investor की जेब में गया पैसा. So 1% is holding 99% of the wealth. In other words, economic development necessarily हो रहा हो economic growth से, ये जरूरी नहीं है. So in other words, if I were to write it down in equation, economic development, ठीक है, economic development also includes some social components. Social components in itself. Economic development एक qualitative figure है, and economic growth is a quantitative figure. Are you getting the point? तो इसका अब मैं आंसर्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या है. इसका आंसर्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है. स्ट्रक्चर कैसे करना है आंसर को, वो इंपॉर्टेंट है. डेटा थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज इनएडिक्वेट अटेंशन. तो अब इस लाइन पे आप सोचिए, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थीम पे सोचिए, सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. भाई आई डिड टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? इनफॉर्मल. 86% ऑफ द सेक्टर इज इनफॉर्मल. इकोनॉमिक सर्वे में एक वर्ड यूज होता है, चक्रव्यूह चैलेंज. चक्रव्यूह चैलेंज मीन्स आर इंडस्ट्री वंस, देखिए व्हाट हैपेंस इज दैट ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है और ये हमारा सर्विस सेक्टर है. कई बार आप पढ़ेंगे कि हम लोगों ने डायरेक्टली जंप कर दिया यहां से यहां, प्राइमरी से टर्शियरी की तरफ, और इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ. वे जॉबलेस ग्रोथ वाला ही सवाल है. ये क्या हुआ इधर बीच में? सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिड नॉट डेवलप. तो कौन है यहां पर? यहां पे एमएसएमईज हैं. हु आर दीज एमएसएमईज? These are micro, small and medium enterprises. What are the issues with them? They don't want to grow. They don't want to grow because the moment they start showing numbers, they'll have to register themselves to GST. And they'll have to formalize their things. Cut करना पड़ेगा इन लोगों को PF वगैरह लोगों का. And that is going to bring down the salary of the people. So we find that these MSMEs don't want to grow. And precisely why they remain small in size. और ये जितने भी प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं जो इतने स्किल्ड नहीं है, who can go there and work in the service sector, they end up being in MSME. In other words, the point that I am trying to make over here कि इनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है. सोशल सिक्योरिटी नहीं है. एक और कॉन्सेप्ट मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, गिग वर्कर्स. Who are these gig workers? They are the ones who are working on the platforms of Swiggy, Zomato, Uber, Ola. They do not have social security. Their bargaining power is not that strong. The company cuts a lot of commission. ऐसे सिचुएशन में इनके पास भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है. इंटरनेट शटडाउन, इंडिया इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेट कट हो गया अगर, तो these people are going to get rendered jobless because they're dependent on the internet. है ना? So what is happening? सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया गया है. तो एम्प्लॉयमेंट में दिस इज रिफ्लेक्ट अपॉन द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ना. सोशल सिक्योरिटी नहीं, कल को बीमार पड़ जाएंगे तो नहीं. अभी राजस्थान ने एक नया एक्ट पास किया इन्हीं गिग वर्कर्स के लिए, न्यूज में था. गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज वन पॉइंट दैट यू कैन टॉक अबाउट इन द एम्प्लॉयमेंट. सोशल सिक्योरिटी के बारे में यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर पॉइंट. हेल्थ के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन के बारे में. क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, द टीचिंग दैट वी आर डूइंग एंड द आउट in our country, we find that our education system is so placed that whatever we are being taught and the kind of jobs that we are expected to do in the future, complete mismatch है. sin theta cos theta का कोई काम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना. ठीक है, कंस्ट्रक्ट जो करते थे हम लोग कंपास और प्रोट्रैक्टर से, I don't think it's coming much of a use, but you have spent a substantial time learning all that. इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कोई लोग हैं या उस तरीके के काम में आर्किटेक्ट है तो दे आर गेटिंग द बेनिफिट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि वी आर नॉट taught the how to handle finances, how to have mental strength, how to deal with relationships in the world in general, how to change the stepney and the tire of a car. Just give you an example, how to do the gardening,
how to deal with other person who is not so receptive. These are the basic skills that we're not taught in the school and the colleges as such. Colleges में क्या होता है? Nobody goes and attends. It's complete wastage of time. Apprenticeship का जो concept है, it's not that significant. तो ये सारी चीजें आप human resources में reflect करना चाहिए आपके answers में. अब मैं थोड़े थोड़े से points आपको दे देता हूँ, जो important points है वो मैं दे रहा हूँ. देखिए, it's a very comprehensive thing. तो अभी देखिए, तो malnutrition से आप start कर सकते हैं. malnutrition में लिख दीजिए wasting, stunting, underweight, 3 points. हो गया. अब देखिए कुछ डेटा दे दीजिए. हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्डोमीटर, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ अंडरनरिश्ड पीपल. अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट रिसीविंग इनफ न्यूट्रिशन, एंड ऑल्सो इट इज रिफ्लेक्टेड इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कहता है कि 36% ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टंटेड. थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स रखिए अपने आंसर्स में, ठीक है. 19% आर वेस्टेड, 32% आर अंडरवेट. अब इसको 10 बार जाकर के आप लिख लीजिए, कहीं पर जाकर के टेस्ट सीरीज में लिख लीजिए. इट इज गोइंग टू कम हैंडी, है ना. एनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये लो हेमोग्लोबिन, 67% ऑफ द चिल्ड्रन आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, एंड ऑल्सो इट्स वेरी प्रेवलेंट इन विमेन. So you're going to write about children and women together, ठीक है. फिर प्राइमरी कॉजेस क्या है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है. लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. इन इंडिया वी आर फोकसिंग ऑन द टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम, नॉट ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम. तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है. वी आर मोर फोकस्ड ऑन क्यूरेटिव रादर देन प्रिवेंटिव केयर. हमारा बजट उतना नहीं है हेल्थ केयर में जो हम स्पेंड करते हैं. सो ओनली 3% ऑफ द जीडीपी. तो जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स इतने नहीं है हमारे पास. तो बच्चे का जो हेल्थ होता है, चाइल्ड का और विमेन का जो हेल्थ होता है, एंड एड टू द फैक्ट दैट लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है. They do not have the idea about what constitutes balanced meal. They do not have the idea of the relevance of breastfeeding and how to prevent micronutrient deficiencies, ठीक है. हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बड़ा वीक है ना. जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसमें बहुत सारा करप्शन और लीकेजेस है, ठीक है. हम लोग देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए. Only 50.3% of the children under 6 years they received any service from any आंगनवाड़ी system in the last 6 months. अब आप बोलोगे सर ये सब फैक्ट्स कहां से लाए? तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ जाता है, न्यूज़पेपर में आते रहता है ये. It keeps on coming up in the newspaper. तो these are the 2 पेज का नोट्स बना लो. थीम समझ में आया? तो this is what are the steps which is being taken by the government? मिशन पोषण 2.0, यही माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को मीट करने के लिए आईसीडीएस को और रोबस्ट बनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्या हो रहा है उसमें? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ विमेन. उनको इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि यू कम एंड डिलीवर द चाइल्ड, है ना. मिड डे मील स्कीम, सो दैट द चिल्ड्रन आर नॉट ड्रॉप आउट्स. कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए ना, इनके बेचारों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है. सो ये मिड डे मील स्कीम इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, ऑल्दो वी कैन डिबेट ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड दैट इज बीइंग सर्व्ड. But at least it's one of the incentives that why they want to send the child to the school in the very first place. So midday meal scheme हो गया. Scheme for adolescent women, इसी को सबला कहा जाता था पहले. सबला जिसमें women are given iron and folic. This is adolescent women are given. ठीक है. Mothers absolute affection, माँ एक प्रोग्राम है. पोषण वाटिकास बनाया गया है, ठीक है. तो ये सारी चीजों दे करके आप बात करेंगे कि ये सारे इश्यूज है. तो ये तो फिर है ही. अब जैसे देखिए, अच्छा इसका बहुत कुछ लेना देना स्वच्छ भारत अभियान से भी है. स्वच्छ सेफ्टी, हाइजीन, प्रिवेंटिव केयर को इनकरेज करने के लिए, बिहेवियरल चेंज को लाने के लिए सारी चीजें. तो एक सेक्शन आपने कवर कर लिया माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का, है ना. एक केस स्टडी आप दे सकते हैं. एक बेमतारा विलेज है छत्तीसगढ़ में. केस स्टडी दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया. सो द एग्जामिनर इज गोइंग टू नो, ओह ही इज समबडी हु नोज हिज फैक्ट्स, हु नोज व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. तो एक केस स्टडी दे दो यार, ठीक है. Bematra in Chhattisgarh, where number of people, children are highest, severe acute malnutrition are as high as 3,300 in December 2022. This is a case study example. ठीक है, ये हो गया. अब लोकल लीडर्स, सरपंच, पंचायत, इन सब को आप अकाउंटेबल ठहराओ कि अपने गांव में सारे लोग ये इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ज्यादातर पीपल आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज. ये पहला 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट इधर हो गया आपके. दूसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. द हेल्थ बेनिफिट शुड बी गोइंग आउट टू द पॉपुलेशन एट लार्ज. सबके पास जाना चाहिए.
तो हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे 6-7 पॉइंट्स दे दो। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? नॉट एवरीबडी इज गेटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर बिकॉज पीपल हैव टू स्पेंड फ्रॉम देयर पॉकेट, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। उसको कम कर सकते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यही करता है, ठीक है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसके बेसिस पर क्या होता है, जो भी हम लोग हैं को इंश्योरेंस दिया जाता है इन केस ऑफ एनीथिंग दैट हैपेंस टू देम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू कवर। आयुष्मान भारत का आप एग्जांपल दे सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग ये सब डिटेल्ड है, मैं बस आपको जो बताना चाह रहा हूं वो देखिए। अब आ जाते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी क्या है? एक गिग इकोनॉमी का एग्जांपल मैंने आपको दिया। गिग इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि लैक ऑफ जॉब्स एंड सोशल सिक्योरिटी है, डिजिटल डिवाइड है, नॉट एवरीबडी कैन गेट एक्सेस टू डिजिटल, ठीक है। लैक ऑफ डेटा है, डेटा का लैक है, एक्सप्लॉयटेशन बाय द कंपनीज है। क्यों? क्योंकि ये दीज पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब्स इन दैट पर्टिकुलर, एक स्टेबल जॉब इनके पास नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि होलिस्टिकली इन सारे एस्पेक्ट्स पे आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। So this question can be handled. अब हम लोग आते हैं जी, इंट्रोडक्शन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है दैट इनकॉर्पोरेट्स इन इट द वेरियस सोशल डिमेंशंस लाइक poverty, like good education. ये these things are important for bringing about economic development. क्योंकि आप human development, human resources क्या है, अब उनके बारे में बात करेंगे। 15 से 59 तक के लोग जो हैं, they are the ones who are part of the force labor force participation. So we need to ensure that इनको optimally इन पे investment किया जाए, तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। Getting the point? तो ये आप मेंशन करेंगे। हाँ जी, उसी को कॉन्टेक्स्ट बना करके आप उसको करेंगे आंसर। सी फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्लेन द, इसमें तो नहीं है कुछ जैसे जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया वो क्या था, The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to human development in India. तो basically ये पहला चीज तो समझिए कि it's a 10 marker. You don't have to mention everything. है ना? First thing, you're going to get 2 pages. It has to be 150 words. But immediately you are going to form a structure. Immediately you are going to form a structure कि what exactly points you are going to talk about. Precisely मैंने जो कहा कि human development को आप break down कीजिए. Human resources क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या? जेंडर इक्वालिटी हो गया आपका। ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे कि इनके साथ क्या इश्यूज हैं। यू विल टॉक अबाउट इन 3-4 पॉइंट्स एंड टॉक अबाउट द इश्यूज दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम, इमीडिएटली यू विल स्विच टू सॉल्यूशंस कि इनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। पहला क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। Why are the 2 statements being written over here? Suggest measures that can address this inadequacy. तो इस इनएडिक्वेसी को पहले पता तो हो कि क्या इनएडिक्वेसी है। गेटिंग द पॉइंट? कोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस में जो इश्यूज क्या क्या सब, मैल न्यूट्रिशन क्या है? इनएडिक्वेसी है, एक इश्यू है। उसको वो इनएडिक्वेट स्टेप्स क्यों है? क्योंकि सफिशिएंट स्टेप्स नहीं लिए गए। सो व्हाट कैन बी द वे आउट? यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट जो गिग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी हो गया। सोशल सिक्योरिटी क्या है? व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी मींस सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट विच इज देयर। अगर इफ यू आर वर्किंग इन एन इनफॉर्मल सेक्टर, कल को मैं आपको हटा दूं, यू आर
you're under a contract for a particular thing. You're not going to get any pension, or for that matter, even when you're going to retire, you are going to get some sort of safety net. वहाँ पे जो मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको. कल को अगर आप application बंद कर दें, तो you're not working. You're getting the point. So safety net नहीं है. Your human resources के development के लिए वो important aspect है. Getting the point. तो ये हो गया. तो ये question number 6 हो जाएगा, ठीक है? We are going to come on question number 7, but before we do that, इस similar theme के questions को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, ठीक है? तो gender justice पे आ जाते हैं, question number 12, ठीक है? अब जैसे देखिए, यही question है, similar theme वाला साथ कर ले रहे हैं हम लोग ताकि आपको एक broadly समझ में आ जाए चीजें. To explain the constitutional perspectives of gender justice with the help of relevant constitutional provisions and case laws. यहाँ पे case laws भी लिखा हुआ है. Questions are being asked कि क्या क्या केस लॉज है. तो अगर इवन इफ यू हैव गिवन अ बेसिक रीडिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं विमेन को लेकर के, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, है ना? देखिए आप कैसे सोचेंगे, पहले सोचना कैसे है. ये SDG 5 में इसके बारे में बात होता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में. एक कीवर्ड है वूम टू टूम, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड के बारे में बात हो रही है. सन मेटा प्रेफरेंस. Son meta preference is something which more wantedness for a male child. Patriarchal mindset, leaky pipeline syndrome जिसके बारे में मैंने I have talked about. Access to sex selection, getting to know about the sex of the child before the child has taken birth. Global gender gap index क्या है? 112 out of 153. We find that the gap in the payment of the people on the basis of their gender is very prominent. और इस gap को close करने के लिए it's gonna take you at least 100 years, है ना? But we find that health and survival में 147, India is 147th position out of 149 for women. Economic participation, यानी women working women, again India's rank is 142 out of 149. कहाँ पर है ये? World Economic Forum के reports और World Bank के reports में. Female labor force participation, India is 163 out of 181, यानी females are not working in the workforce. I have already discussed about all these, given you a comprehensive idea. Now these are going to give you the structure to talk about this gender justice. Why is it that we are using the word justice? Because one section of the society is not represented enough, is not positioned strongly to be the decision maker for their own good. And whose responsibility it becomes? The constitution and the people who are sitting and taking the decisions, to be sensitive towards their need and requirement. Are you getting the point? That is why we are using the word justice. That is why we are using the word vulnerable section. ठीक है? अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो देखो, women receive 34% fewer wages. मतलब if a male is receiving 100 rupees, the woman is getting 66 rupees for the same sort of job that she is doing. Getting the point? And that has precisely to do with what sort of output. Suppose Virat Kohli is also playing cricket and women cricket, अब उनका सैलरी सेम कर दिया है हालांकि BCCI ने, लेकिन it is also dependent on the fact कि how much crowd you can pull. अगर शाहरुख की कोई मूवी है तो it is going to get better opening. That is why he is getting more paid than suppose Deepika Padukone or any other actress with whom he is working. It has not as much to do about the gender than the business that comes with it, है ना? So देखने का holistic नजरिया भी है, but typically in a corporate circle it is not how it works. It is also has to do with the, you know, for the same role women might be getting lesser paid, and that is why you find that women receive 34% fewer wage. World average is 20%. मतलब world over, if a man is getting 100 rupees, women is getting 80 rupees. Less than 1/3 of the women are in managerial role, decision making roles. Less than 1/3 of them are there. According to UNICEF, 1.5 million girls less than 18 years are getting married every year. India has also been referred to as world child bride capital. So these are the keywords that you are going to mention in your answers. It's a 10 marker or 15 marker. You can elaborate on all these things. Real issues kya kya hai? Concerns of maternal death. We find that there are 45,000 deaths which are taking place every year while giving birth to a child. Assam is the #1 state where the woman dies because of during the childbirth. है ना? Access to maternal care, safe abortion rights. Women are not having safe abortion rights. Only 20% of abortions for non-married women or unmarried women
take place in public or private hospitals because of the social stigma which is attached with it. Precisely, there is a rise of these cottage in abortion centers जहां पर the abortion takes place, which is not good for the health of the woman. इसीलिए हम लोग देखते हैं कि abortion rights के बारे में हमने बात किया अभी, access to contraceptives और recognition of adolescent sexuality. So these are some of the problems that women are suffering from. अगर ये broader picture आपकी नजर में है, तो you are going to talk about the articles and everything. It's a cakewalk. Article 14, Article 15, Article 16 इसके बारे में बात करता है. Article 39 talks about it. Article 42 talks about it. There are certain legal provisions which talk about it. जैसे देख लो Sexual Harassment of Women at Workplace Act. इसी को तो कहते हैं हम लोग विशाखा गाइडलाइंस, POSH, 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 Prevention of Sexual Harassment at Work. विशाखा के केस में गाइडलाइन है. वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब एक्ट बन गया है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. I talked about the co-parsonary rights of inheritance of women. विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस है ये, जिसमें विमेन अमेंडमेंट किया गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, एंड विमेन वर आल्सो गिवन द सेम राइट टू इनहेरिट एज टू व्हाट मैन कैन इनहेरिट. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है? आपका पेड लीव्स मिल रहा है उनको इवन व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट. टिपिकली क्या होता है, व्हाई शुड आई लुक from an entrepreneur's viewpoint, why should I be hiring somebody who's going to take paid leave for say 5 weeks, 6 weeks, and I have to pay for that particular thing? अगर मैं उसको economic terms में देखूं तो it is a not very profitable decision to make. I would prefer a man over a woman. ये एक case study है बीड district में where women are undergoing hysterectomy. They're cutting their uterus. These are those sugarcane plantation workers. Once they have given birth to the child, देखो 1-1.5 घंटे में बहुत ज्यादा डिटेल तो डिस्कस नहीं हो सकता, बट आई एम गिविंग यू अ ब्रॉडर आउटलुक. दे कट आउट देयर यूटेरस. व्हाई? बिकॉज टू अवॉइड मेंस्ट्रुएशन व्हिच इज एन अ सॉर्ट ऑफ obstructs in the process of sugarcane cultivation. तो बीड डिस्ट्रिक्ट में there is huge numbers of women undergoing hysterectomy. Hysterectomy is removal of uterus. Once you don't have the uterus, you won't be suffering, you won't be having menstruation or menstrual pain आपको नहीं होगा, and you are not going to give birth to the child. तो आप सोचो कि किस लेवल पे लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, उस लेवल का पेन उठा रहे हैं. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया. एक बार देख लेना MTP एक्ट 1971 क्या होता है. स्पेशल मैरिज एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, विशाखा वाला केस जो मैंने आपको बताया, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ना है पॉलिटी में. इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है, कई बार खाप पंचायत डिसीजन ले लेते हैं कि भाई ये शादी नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो. लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भाई राइट टू मैरी है, एक वुमेन का है, वो कर सकती है मैरी. थोड़ा सा ये मैंने डिटेल में भी दे दिया है उस पर्टिकुलर केस में, रीड कर लोगे तो केस स्टडी समझ में आ जाएगा. अभी ट्रिपल तलाक वाला क्या है, जेंडर जस्टिस है. शाहरा बानो का केस, शाह बानो का केस, सब क्या है, जस्टिस है. नाउस फाउंडेशन क्या है, LGBTQ वाला. नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, ये लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, एसिड अटैक का केस. देखो 15 केसेस मैंने आपको दिखा दिया विच इज टॉकिंग अबाउट जेंडर जस्टिस. इट्स अप टू यू which cases you want to use and what marks you're going to get 10 marker है या 15 marker है, पर holistically you have to have an understanding of the concept. बात समझ में आया जेंडर जस्टिस का? ठीक है. प्रोग्राम्स के बारे में लिख दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र, सुकन्या समृद्धि योजना. The list goes. In a 10 marker 5 पॉइंट्स रखो अपने पास. This question can be a 15 marker also very easily. ठीक है. So we are done with question number 12. आपके पास है क्वेश्चन पेपर? ठीक. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India. सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि how could you could have predicted this question. Now once we are done with that, let's talk about what
So the question is about what is the role of the civil society in ensuring this. It is not asking about कि women का participation होना चाहिए कि नहीं. So this makes it a relatively difficult question. भाई आप सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो, पर आपने अगर गवर्नेंस की क्लास मेरी अटेंड करी है या फॉर दैट मैटर कभी भी कहीं भी पढ़ा है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रेशर ग्रुप्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट these SHGs, self-help groups. Have you heard of these self-help groups, civil societies, NGOs? What do? These are the components of pressure groups which try to influence the policies by raising these issues and to ensure that women get effective participation in the decision making roles. प्रिसाइजली यही सवाल पूछ रहा है कि क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल सोसाइटी का, यानी थोड़ा सा आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करना पड़ेगा. यू विल हैव टू शो सम प्रेजेंस ऑफ माइंड टू डील विद दीस क्वेश्चंस. इट हैज इंटरलिंक्ड टू वर्टिकल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट आस्किंग अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट रोल सिविल सोसाइटी हैज प्लेड. ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डेटा देख लें तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 15% ऑफ विमेन आर इन लोकसभा, 14% इन राज्यसभा, और एमएलए में तो 9% है. पीआईबी में जाइएगा, थोड़ा सा गूगल करके पीआईबी में डेटा मिल जाएगा आपको. कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूं क्या है. अगर आपको डेटा चाहिए गूगल करो और देखो कि भाई क्या परसेंटेज. हो सकता है बुक्स में इट माइट नॉट बी मेंशन. गो इन गूगल एंड राइट. सो बी वेरी ऑब्जेक्टिव विद द फैक्ट्स दैट यू आर थ्रोइंग. रैंडम जनरल बातें नहीं करनी है अगर मार्क्स लाना है तो. सो वी सी दैट ओनली 9% आर इन स्टेट असेंबलीज. See, the question is asked in state legislatures. It is not being asked in parliament. So you need to have a percentage कि कितनी how many what is the percentage of women in state legislature. तो हम लोग देखते हैं only 9%. क्यों भाई? क्योंकि gender stereotypes है. Women cannot take the decisions and all that. ये वही थीम है, वही थीम चल रहा है. तो यहाँ पे आप competition, ठीक है, वर्क एंड फैमिली का रोल उसका ज्यादा है, केयर इकोनॉमी का रोल है, लैक ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क, वो अपने दम पे इलेक्शन जीतना, उसके लिए मोबिलाइज करना लोगों को इतना इफेक्टिवली नहीं कर सकती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है उसके पास, सोशल कंडीशनिंग नहीं है. इफ अ वुमन गोज आउट एंड स्टेप्स एज अ लीडर, अ लॉट ऑफ स्लर्स, मेल गेज स्लर्स, इस तरीके की बातें, कैरेक्टर असैसिनेशन, 10 तरह की बातें की जाती हैं, तो उसकी सोशल कंडीशनिंग ऐसा नहीं है कि उसे डील करे. नॉट एवरीबडी कैन बी थिक स्किन्ड. वंस यू गो आउट इन अ man's वर्ल्ड, यू हैव टू डील विद strong repercussions from that particular thing. So it's not an easy thing. तो ये चीज सोशली कंडीशन नहीं है, वो अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट है उनके लिए. तो इसीलिए जरूरत है कि पुश किया जाए इनके लिए, इनके रोल के लिए. तो क्या क्या कौन कौन से सिविल सोसाइटीज, अभी न्यूज में था ये सब, इट वॉज इन न्यूज. तो हम लोग देखते हैं नेशनल अलायंस फॉर विमेन, इन्होंने मैनिफेस्टो डिमांड किया था सबसे पहले, डिमांडिंग की इनका स्टेट लेजिस्लेचर में होना चाहिए. असम में हम लोग देखते हैं 5 women led NGOs published Women's Manifesto 21. ठीक है, फिर NGOs like भारत जागृति, they have been talking about women reservation bill, है ना. समाजवादी पार्टी ने भी एडवोकेट किया था स्पेशल कोटास फॉर ओबीसी फीमेल्स, they talked about it. रिसर्च स्टडीज जैसे कि आपका ADR's नेशनल इलेक्शन वॉच हैज टॉक्ड अबाउट इट. हम लोग देखते हैं कि महिला राजसत्ता आंदोलन एक हुआ था जिसमें कि इसके बारे में बात किया गया है. Women's Democracy Network and Fem First Foundation has been talking about it. Organizations like Khabar Lahariya and Writing with Fire all have been highlighting the issues of the women. So it's a relatively difficult question for a 15 marker, but आप 15 marks नहीं तो एटलीस्ट 7-8 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है जेंडर जस्टिस का. अब समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि यू विल गेट 3 पेजेस टू राइट दिस आंसर, यू आर गोइंग टू गेट 3 पेजेस, 15 मार्कर. अगर मान लो नहीं भी पता है तो आप इस सिचुएशंस को डॉज करने के लिए क्या करोगे कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसके बारे में बात करोगे, विमेन के परसेंटेजेस के बारे में बात करोगे, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करोगे, एंड यू विल टॉक अबाउट व्हाट रोल सिविल सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजिंग, और ये सारी बातें करके आप बात कर सकते हो. स्टेट लेजिस्लेचर समझ में नहीं आ रहा है तो पार्लियामेंट के बारे में लिख दो, छोड़ना नहीं है. स्ट्रैटेजी बता रहा हूं निकालने का, 20 परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे. You're getting the point? You won't be able to write 20 perfect answers. Just like a game of cricket, you cannot hit every ball for a 6. You have to dodge few questions. So it's a relatively difficult question. But if you have a thematic understanding, you can solve this question. ठीक है? So question number 14 is doable. अब हम लोग आ जाते हैं एक सवाल जो हर साल पूछता है, वो है question number 8, e-governance.
It's a favorite topic. It's a favorite topic of UPSC. Every year the questions is being asked. प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके आप देखोगे ना, ई गवर्नेंस के सवाल हर साल आते हैं, हर साल. तो ई गवर्नेंस एज अ क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज assured in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? एक तरीके से आपसे ये पूछ रहा है कि ई गवर्नेंस में क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं. दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. इफ यू लुक एट द सिलेबस, स्ट्रेट अवे इट्स रिटन की ई गवर्नेंस से क्या क्या इश्यूज हैं, कि उसी का एक उठा करके इसने पूछ दिया. जी बिल्कुल सही है. अब तुम सोचो यार कि हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस को जोड़ दे रहे हैं आईसीटी के साथ. जहां टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया वही ये ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस क्या कर रहा है, इफिशिएंसी बढ़ा रहा है. अगर आप यूज करके जी पे पेमेंट कर रहे हो या कहीं पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, इट इज थ्रू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट यू आर डूइंग समथिंग. अगर आप डिजी लॉकर में अपने डिटेल्स को सेव करके रख रहे हो तो देयर इज सम प्लेस वेयर यू कैन सेव इट. mygov.in में जाकर के आप किसी पोल में हिस्सा ले रहे हो या यू आर गिविंग आउट योर ओपिनियन ओवर देयर, यू आर बीइंग डायरेक्टली लिंक्ड विद द गवर्नमेंट एंड यू आर शेयरिंग योर व्यूज. आप आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन जाकर फिल कर ले रहे हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप जैसे मान लो कि अगर कहीं देयर इज अ पॉट होल, इफ यू क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट टू सम एप्लीकेशन ऑफ से योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर, सो टॉकिंग अबाउट एंड इफ यू आर गोइंग टू उसको लिंक कर दे रहे हो आप उसकी कोऑर्डिनेट्स के साथ, यू आर डूइंग दैट. होता है भुवन ऐप में, होता है भुवन ऐप के थ्रू आप कर सकते हो ये सब. तो यू कैन डू ऑल दैट, जिसके बेसिस पर आप गवर्नेंस के इफिशिएंसी को यू आर मेकिंग इट मोर इफिशिएंट. सो दैट इज व्हाट ई गवर्नेंस इज ऑल अबाउट. सो ई गवर्नेंस के बारे में आप देख लो, एग्जांपल्स आप क्या क्या दे सकते हो. भूमि राशि, इट्स सॉर्ट ऑफ अ पोर्टल जहां पे आप जमीनों के बारे में आप पता कर सकते हो. झार भूमि में जाओगे तो झारखंड की जो भी लैंड्स हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड हैज टेकन प्लेस. मिस्टर मोदी हैज बीन यूजिंग द वर्ड्स लाइक टेक एड. अब ये भी याद रखो कि मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज अ नैक फॉर द कीवर्ड्स. बहुत सारे कीवर्ड्स वो यूज करते रहते हैं. इट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू इफ यू यूज दोस वर्ड्स. टेक एड मतलब टेक्नोलॉजी का डिकेड है ये, टेक प्लस डिकेड, टेकेड. ठीक है, ये टेकेड हो गया. या फिर आप GOV गव टेक 3.0 अभी चल रहा है. इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ वेरियस, जैसे मान लो कि अगर आपको कार का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन, ऑल दीज पोर्टल्स आर इंटरलिंक्ड. कहीं भी जाओ एक जगह आपको सारा डेटा मिल गया, कनेक्टिविटी है. Yesterday I gave you an example of connecting police with judiciary and your prison management. किसी भी prisoner का डेटा लेना है, पुलिस बैठ करके वो डेटा ले लिया और जज को चाहिए होगा उसके बारे में, वो बैठ करके, that is interoperability, that is e-governance and governance using technology 3.0, which is interlinking all these platforms together. That is what e-governance is all about. ठीक है, तो देखो PM जी दिशा, ठीक है, या फिर आप देखो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या डिजिटल पेमेंट सिस्टम. ई कोर्ट्स के बारे में सुना होगा आपने, ई डेमोक्रेसी सुना होगा, ई डिस्ट्रिक्ट सुना होगा. ये सब क्या है? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस. ठीक है, उमंग ऐप के बारे में, कोई अगर उमंग ऐप जाओगे, कभी यूज किया होगा तो आप देखोगे उमंग ऐप में सारी चीजें एक जगह मौजूद है, पेमेंट से लेकर के हर चीज. ठीक है, स्वयं यूपीएससी 2016 प्रीलिम्स में सवाल पूछ दिया था स्वयं से. ठीक है, तो ई हॉस्पिटल जहां पे सारा डेटा आपके पास मौजूद है. तो ये आप छोटा मोटा एग्जांपल देंगे, माई जीओवी ये एग्जांपल दे देंगे. टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या क्या है? G2G, G2C, G2B, G2E. मतलब बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स इफ दे वांट टू कैरी आउट समथिंग, जैसे कि खजाने, स्मार्ट गवर्न, ये सारे एग्जांपल्स है आपका ई गवर्नेंस का. ठीक उसी तरीके से G2C, डायरेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू द सिटीजन. भूमि प्रोजेक्ट, आई एम अ सिटीजन, आई वांट टू नो अबाउट माय लैंड, आई विल गो ऑन द भूमि, आई विल गो ऑन द ज्ञान दूत, है ना. फिर G2B बिजनेसेस के लिए क्या है? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, टैक्स फाइलिंग करना है अपनी कंपनी का, तो आई एम अ बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, आई कैन गो ऑन दीज एप्लीकेशंस. व्हाट इज हैपनिंग? सी बहुत सारा है, भूमि प्रोजेक्ट, ज्ञान दूत, लोकवाणी प्रोजेक्ट, ये सब आप एग्जांपल्स को मेंशन कर सकते हो. खजाने प्रोजेक्ट, है ना.
अब मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है, अच्छा इसका एडवांटेज क्या है, इंटीग्रेशन हो जाता है इससे, पर मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस। डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री में, सबके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अ फार्मर हु इज वर्किंग से in a village area of any state for that matter doesn't know how to make use of a smartphone, he won't be able to use it that effectively, ठीक है। linguistic barrier है, most of them are either in Hindi language or English language, linguistic languages are not an option over there, so anybody who's in the village is not having effective knowledge of going about it. दूसरा क्या है, challenges in interoperability, we are still in that phase, GOV Tech 3.0। देखो पहले जब हम लोग we were shifting from pen and paper to digitization, it was government tech 1.0, जहां सारे को हम लोग we were converting it into digitized form। थोड़ा सा और एडवांस स्टेज हुआ तो हर एक मिनिस्ट्री और हर एक डिपार्टमेंट की अपने पोर्टल्स होने लगे जहां पे आप लॉग इन कर सकते हो, आपका एक डेटा एनालिटिक्स आ जाएगा, वो GOV Tech 2.0 हुआ। अब क्या हो रहा है, उनको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाने की बात हो रही है, तो इसको GOV Tech 3.0 कह रहे हैं। इसी को कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक मिनिस्ट्री को दूसरे मिनिस्ट्री, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे से कनेक्ट करके एक सिस्टम बना लो। इफ यू आर गोइंग एंड विजिटिंग अ डॉक्टर, he will just type and you have the password and your all medical history that you have been going through, you are going to, इसी को कहते हैं health stack, HEALTH, health stack, STACK, stack। So what is doing, it is bringing about ease in governance, e-governance को ease in governance भी कहते हैं। तो उसके इश्यूज क्या क्या है, अभी भी हम लोग इतने एडवांस नहीं है। तो चैलेंजेस इन इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब सब कनेक्टेड नहीं है अभी। दूसरा लिंग्विस्टिक बैरियर, तीसरा डिजिटल इलिटरेसी, चौथा लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात, जब भी डिजिटल आएगा तो प्राइवेसी इश्यूज है। वी डू नॉट हैव अ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन आवर कंट्री। पॉसिबिलिटी है इस बात की कि भाई उसका वो मिसयूज कर सकता है, ठीक है। और अगर आपका डेटा का मिसयूज हो जाए तो कंप्लीट रिड्रेसल और ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म अभी भी उतना रोबस्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फिर फेडरल इश्यूज भी है। अब जब आप डेटा देते हो तो कुछ जो स्टेट के पास होना चाहिए वो स्टेट के अलावा सेंटर में भी चला जाता है, तो फेडरल इश्यूज। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर देखो मोटर व्हीकल्स एक्ट है ना, या अगर सबको आप एक ही प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, नेशनल हाईवे वाला भी आप के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, नेशनल हाईवे को मोटर व्हीकल्स के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसमें से कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कुछ स्टेट के साथ आती है। और जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वो डेटा तो स्टेट से सेंटर के पास भी चला गया ना, एक तरीके से आप देखो तो फेडरल इश्यूज इससे क्रिएट हो सकते हैं। तो आपका डोमेन जो बनाया गया है वो एक इंपैक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इट मे इंक्रीज इनइक्वालिटीज, बिकॉज गेटिंग एक्सेस टू सर्विस इज एवरीबॉडीज राइट, एवरी सिटीजन राइट, बट इट इज सॉर्ट ऑफ अ एक्सपर्टीज दैट यू नीड टू हैव। सो जिसकी वजह से एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाता है इफ यू आर नॉट दैट वेल एजुकेटेड और इफ यू आर नॉट दैट टेक savvy। Your parents, your mom or maybe your grandmom cannot use आधार या आपका जीपे नहीं यूज कर सकती है with that ease, तो वो तो डिपेंडेंट हो गई कि कोई आकर के उनके लिए वो पे कर दे। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एन इनइक्वालिटी दैट इट क्रिएट्स। और इतने सारे जो प्रोग्राम्स, डिजी लॉकर, ये आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। समझ में आ रहा है या मैं लिंक कर पा रहे हो यार? मेरी कोशिश ये है कि समझो कि पेपर क्यों आ रहा है, ऐसा क्या है पेपर में, वो हो जाएगा। इफ यू हैव आंसर्स टू व्हाईज, द आंसर्स टू व्हाट्स एंड हाउज विल ऑटोमेटिकली कम। ये याद रखना जिंदगी में, व्हाईज की तरफ जाओ, ऐसा क्यों है। यूपीएससी की साइकी को समझो। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए या किसी भी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना जिससे तुम डील कर रहे हो, पर्सनालिटी टाइप होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स, है ना। तो दैट नीड्स टू बी सीन, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस, ठीक है। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 4 क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस बिकॉज अभी स्लॉट दूसरे टीचर का है, तो आई विल आस्क फॉर सम मोर टाइम टू डिस्कस द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस। आइडिया इज की क्वालिटी डिस्कशन होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस द स्लाइड एंड ऑल, डोंट वरी अबाउट दैट, focus more on how do we go about the questions, ठीक है। चलो, thank you।